Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ankusha Patil, student at IIM Rohtak, and today I am here with a brand new video on the must-do things in MBA. So if you're preparing for CAT or you're the one who is newly inducted to an MBA program, this video is for you. So what happens is, when you're newly inducted into MBA, you realize that there are people from different backgrounds, like कोई commerce से है, कोई doctor है, कोई engineer है, कोई lawyer है, and so on. But what happens when you enter your academic section, you realize that there are many subjects that are taught to you. For example, finance, HR, marketing, to operations. अब अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको फाइनेंस का एफ भी नहीं आता है ना, हाउ टू ब्रिज दिस गैप. सो द वेरी फर्स्ट टू डू थिंग इन MBA विल बी द सर्टिफिकेट कोर्सेज. अब कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मैंने खुद किए हैं दैट आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड यू ऑल. वेरी फर्स्ट वन इज योर ब्रांड मैनेजमेंट विच इज ऑफर्ड ऑन कोर्स एरा by the University of London. The second one is marketing and analytics. It is again there available on Coursera but offered by University of Virginia. And the third one by the name of fundamentals of financial accounting, which is offered again by University of Virginia and is available on Coursera. It is not a sponsored video. और last certificate course which every MBA person should do and I recently completed is the Excel. मतलब क्या है ना, Excel सिर्फ आपकी MBA लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है. इवन आफ्टर आपका MBA खत्म हो जाता है, आपको Excel हमेशा काम आएगा. सो डू कंप्लीट Excel as soon as possible. बट देयर इज अ स्मॉल ड्रॉबैक विद Excel. क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है और जब हम कोर्स कर रहे होते हैं तो इट्स देयर in our mind, right? But what happens is जब उसका टच चले जाए या आप उन फंक्शंस को रेगुलरली यूज ना करें तो आप भूल जाते हैं वो फॉर्मूले. बट द बेस्ट थिंग इज यू नो हाउ टू अप्लाई इट. तो अगर आप वी लुकअप फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्मूला भूल भी गए तो यू जस्ट हैव टू गूगल अप एंड देन यू नो हाउ टू अप्लाई इट, राइट? सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज. इट बिकम्स एक्चुअली. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप अ वेरी गुड लिंक्डइन प्रोफाइल. Now, I was a fresher, तो मैं LinkedIn पे रोहतक आने से पहले थी नहीं. But if you're not a fresher, you might have an ID already. But उसको कैसे डेवलप करना है, that's what I'm gonna be talking about. The very first thing is, as soon as you make a ID in LinkedIn, there's a headline. अब headline काफ़ी precise and crisp होनी चाहिए. For example, you are into MBA और आपका इंडक्शन हो चुका है किसी भी एक क्लब या कमेटी में. यू शुड बी मेंशनिंग द पोस्ट देयर. यू शुड ऑल्सो बी मेंशनिंग द नेम ऑफ द कॉलेज एंड इफ यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस विद एनी कंपनी, मेंशन अबाउट दैट. ठीक है. उसके बाद कम्स योर अबाउट सेक्शन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैव कम अक्रॉस जिनका अबाउट सेक्शन होता ही नहीं है. ना अबाउट सेक्शन की अगर बात करें, दैट शुड बी वेरी वेरी क्रिस्प ऑफ अराउंड 50 to 60 वर्ड्स, wherein you should be mentioning about what you are really ambitious about and what you know plan to do in future, or if you have any certificate course or a professional certificate course, like you know you have cleared any CFA level or you are a CA or so, to mention about that. Or if you have a very relevant or a very good work experience that you're really proud about, mention about that. अब आता है section experience का. Now this is a very very important section. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप MBA में एक बार इंडक्ट हो जाते हैं, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट्स. और लाइफ प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नहीं आते हैं यूजुअली, राइट? तो यू फील लाइक यार छोटा सा ही तो ब्रांड है और 2 ही महीने तो काम किया है, क्या ही इतना कुछ रेलेवेंट कर लिया या क्या ही इतना फ्रूटफुल कर लिया है कि मैं उसे लिंक्डइन प्रोफाइल में एक्सपीरियंस में डालूँ. एक्सपीरियंस में तो वही होना चाहिए यू नो कि जिसमें हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कुछ अच्छा सा ब्रांड हो, कुछ देखे हमारे प्रोफाइल पे. So please keep this aside. I had it in my mind and I'm over it now, and I really don't want that you should get into this. Do mention about whatsoever life projects you're doing in your MBA life. That really counts. Because क्या होता है? Now that you're inducted into an MBA program, by the month of September, your summer placements will be nearing, and that's when you'll start preparing for your interviews. Before that, obviously. तो क्या होगा कि सबसे पहले इंटरव्यूअर ना आपका CV देखेगा और CV में से ही सबसे पहले आपको क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर आपने लाइफ प्रोजेक्ट किए हैं तो आई एम डैम श्योर दे आर गोना बी आस्किंग यू अबाउट योर लाइफ प्रोजेक्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ प्रोजेक्ट बहुत पहले कर लिया है एंड भाई इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपेयर करना है कि भाई काम क्या किया था और आपको याद ना रहे, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस में जाएंगे जो हमने लिंक्डइन में अपडेट किया था. एक्सपीरियंस में हमें क्या क्या अपडेट करना है, द टाइटल, द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट, एंड देयर इज अ बॉक्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. उसमें ज़रूर लिखे whatsoever you have contributed in your life project, so that before the interview you just go there and check it out कि आपने क्या काम किया.
and just in a minute you'll be like हाँ मैंने ये काम किया, you'll be able to connect. So that's how easy it becomes. तो जो about वाला description section है, don't miss out on that, because you know this is a very very small mistake that I did, but it does count, and now I feel like how easy it becomes to connect with the work that you have already done. So do this, and it does not matter what big or a small brand it is, do add it in your experience section in LinkedIn, right? After that comes your education section, wherein you mention about your college, your school, और वहाँ पे भी अगर आपके कुछ अच्छे achievements है या कुछ अच्छा आपने अच्छे percentage आए हैं आपके या कुछ भी, तो you can mention about that. Then lastly towards the end there comes honors and awards. वहाँ पे भी if you have got good awards or something like that, do not shy to showcast on it, do it, because MBA is somewhat about marketing yourself. तो जब आपको platform मिल रहा है LinkedIn में, तो क्यों ना मार्केट किया जाए अपने आप को. सो डू मेंशन इफ यू हैव अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन दैट सेक्शन एज वेल. ठीक है, वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, अब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल तो डेवलप हो चुकी है. नाउ यू हैव टू ग्रो दैट अप. नाउ हाउ टू डू दैट? बोलना काफ़ी आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है. इफ यू वांट टू ग्रो द नंबर ऑफ फॉलोअर्स और द नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड सो, तो कीप पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन फ्रिक्वेंटली. So that's how you can just keep growing your LinkedIn profile as well. Now the third most important thing is to read blogs. अब blogs क्यों read करें? अब क्या होता है, once you're done with your first term, you have a gist of different subjects like finance, HR, marketing and operations. तो आपकी ना एक knowingly unknowingly एक inclination आ ही जाती है. For example, for me it was marketing. You have to do specialization in that subject, and you should be having extra knowledge about that, right? And how to do it. So I started reading some of the blogs from sites like, since I'm a marketing student, I would like to mention few. बाकी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, so I would not be able to mention. But for marketing, you can read. There's one website by the name Unbounce. Then there's another by the name eMarketer. Then there's the third one by the name your HubSpot. These are few websites which I really found are really really helpful. मतलब आपको पता रहे यार कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनीज में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं. So just have an idea, and that actually helps you to do CP in class also. ठीक है. और इसके अलावा there's one thing that I used to do, and there was a huge gap, I did not do it, and again I started doing it. That is to read FinShots. FinShots is an excellent website. मतलब if you have a habit of just reading at least one news from FinShot, you're done for the day. At least you'll have something fruitful to talk with your friends, bro. So अब कुछ last की चीज़ें. The fourth important thing is now that you're inducted into an MBA program, by the month of September your summer internship companies will be nearing, और उसके पहले आपको अपनी internship की interviews और JDs और सबकी preparation चालू करनी पड़ेगी. Now for the interviews there is one book by the name Case in Point. I'll link it down in the description box below. So that book is a really smooth read. Now if you're a person who is very good to go with interviews, आपके लिए मतलब you'll just complete that book in 3 to 4 days. Just go through it. That's how I did it, and I find it that was useful to me. And if you're the one who is not so go to go with interviews, तो भाई उसे आराम से time देके 1-2 हफ्ते में complete करो. It's a really nice book. You'll see improvement in yourself for sure. ठीक है. Now the fifth and the very important thing is, अगर आप समर इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं या अपने फाइनल प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, देयर इज अ बुक बाय द नेम FMS Case स्टडी. अब इस बुक में क्या नहीं है, फ्रेमवर्क्स है सारे मार्केटिंग के, जो भी HR में भी अगर यूज होते हैं, दोज आर ऑल्सो देयर. देन दैट बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिफरेंट गेस्टिमेट्स. That book also talks about the different problem solving approaches of the companies, and that book also talks about the different industries. तो ओवरऑल अगर आप एक नॉर्मल MBA स्टूडेंट भी है who is already placed, I feel like आपके लिए भी वो बुक रीड करना या आपको आना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू नो दैट बुक यू हैव अ लॉट टू टॉक ऑन. So even I myself is just going to that book again. And so that's it from my end. I hope you all like this video. If you do like this video, then do not forget to hit the like button and subscribe to my channel. Let me know in the comment section below about what all things or what all videos you look forward to watch. I'll definitely make a video on one. And I hope we meet again soon. Until then, take care of yourself, your loved ones, and ta-ta, bye-bye.